Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing very well. So, in our today's session, we are going to start poem F. You can see here, actually, this is not a poem, it is our real life story. Okay? Hmm? It is our real life story in the form of poem. So, come with me and start the poem. See, I have learned. So, the name of this poem is I Have Learned. And this poem is written by Omar B. Washington. Okay? So, in this poem, we are going to see what we have learned in our daily life. Okay? I have learned that no matter how much I care, some people just don't care back. So, the first thing which I have learned in my life is that it doesn't matter how much I care. Okay, it doesn't matter, it really doesn't matter how much I care for any other person, because in return, I'm getting zero. Okay, I'm getting zero because they are not going to care about me. I have learned that it takes years to build up trust and only seconds to destroy it. And I have also learned from my life that it takes a very long time to build a trust. Okay, but it only takes few seconds to completely destroy that trust. Okay, so हमें साल लगते हैं, सालों लगते हैं ट्रस्ट को बिल्ड करने में, किसी के ऊपर यकीन करने में, बट इट टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स टू completely destroy that trust. I have learned that no matter how good a friend is, they are going to hurt you every once in a while and you must forgive them for that. मैंने ये भी सीखा है कि कोई मैटर नहीं, मीन्स कोई बात नहीं है आपका कोई फ्रेंड कितना ही अच्छा दोस्त हो. ओके, मीन्स it doesn't matter how good okay, how good friend you have, but you know what, you are going to hurt. Okay, you are going to be hurt in nearby future. ठीक है, आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको तकलीफ होने ही वाली है. क्योंकि क्या होता है, आपका वो फ्रेंड आपको एक बार जरूर हर्ट करेगा और आप क्या करोगे, उस हर्ट के रिटर्न में आप उनको फॉरगिव कर दोगे, मीन्स आप अपने फ्रेंड को माफ कर दोगे फॉर हर्टिंग योरसेल्फ. ओके, I have learned that it's not what you have in your life, but who have in your life that counts. Okay, देखो मैंने ये भी सीखा है, it is not what you have in your life. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास क्या है आपके लाइफ में. फर्क इससे पड़ता है आपके पास कौन है. ओके, my dear students, I have also learned that it doesn't matter what you have. What matters, what who you have. Okay, ठीक है. I have learned that you should never ruin an apology with an excuse. मैंने ये भी सीखा है कि जब आपको कोई genuinely सॉरी बोलता है तो आप उस सॉरी को किसी भी एक्सक्यूज को देकर डिसमिस मत कीजिए, आप एक्सेप्ट कर लीजिए उस अपॉलॉजी को, उस सॉरी को. ओके, I have learned that you can get by on charm for about 15 minutes. After that, you would better know something. मैंने ये भी सीखा है कि जब आप किसी से बात करते हो for the first time in your life, then for 14-15 minutes, 14-15 मिनट स्टार्टिंग के जो होते हैं आपको लगेगा yes, this person is nice, but you know what, you are only going to see the real face, the real motive behind that person only after you had after some time. जब आप उनसे बात करोगे, उनको जानोगे. ठीक है. I have learned that you shouldn't compare yourself to the best others can do. मैंने ये भी अपने लाइफ में सीखा है कि कभी आप खुद को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए. और क्यों मत कंपेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है जो काम वो बेस्ट कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते. इट्स अ ट्रुथ. बट जो काम आप सबसे बेस्ट कर सकते हो वो काम जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो वो नहीं कर सकते. ठीक है. सो आई हैव ऑल्सो लर्न दिस थिंग इन माई लाइफ. आई एम नॉट don't need to compare ourselves with the other person, because
maybe that person is best in a particular field, but I'm also no less, I'm also best in some particular area. I have learned that you can do something in an instant that will give you heart attack for a life. Okay, so मैंने अपने लाइफ में ये भी सीखा है, जब आपको बहुत तेज गुस्सा है ना, आता है ना, तो आप उस टाइम बहुत कुछ ऐसा कर जाते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि आपने तो गुस्से गुस्से में वो काम कर दिया, बट वो चीज आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए हार्ट अटैक दे देती है। जब भी आप उस चीज को याद करोगे कि मैंने ऐसा कैसे किया है। ठीक है, सो मैंने ये भी सीखा है कि हम कोई भी काम बहुत जल्दी कर देते हैं, बट दैट थिंग विच वी हैव डन इंस्टेंटली is going to give us heart attack for rest of our whole life. I have learned that it's taking me a long time to become the person I want to be. Now I also learned from my life that it is taking a very long time to become the person who in reality I want to become. Okay? I have learned that you should always leave loved ones with loving words. It may be the last time you see them. And and from my life, I also learned that you always have to speak in a very good manner, use very good words for your loved ones, because God knows you are talking with them for the last time. Okay, because life is really unpredictable. I have learned that you can keep going long after you can't. And I also learned from my life that you are not going to do the things for the very long times. I have learned that we are responsible for what we do, no matter how we feel. I have also learned that I am the responsible for the things which I have done. Okay, means the person who is responsible for a particular work, that person who is behind that work, it doesn't matter how you are going to feel. Okay, if you have done something bad, then obviously you are going to feel sorrow feeling. Okay, maybe you don't want to feel, but you have done bad deed. Okay, then you are going to feel sorrow feeling for that. Okay, I have learned that either you control your attitude or it controls you. And I also learned from my life that we have to control our attitude, we have to control our anger, we have to control our temper. But if we are failed in controlling our emotion, then our emotions are going to control us. Okay, so I have also learned in my life that I have to control my attitude, because if I failed in controlling my feelings, then my feelings are going to take control on me. Okay, I have learned that heroes are the people who do what has to be done when it needs to be done, regardless of the consequences. Okay, so मैंने अपनी जिंदगी से ये भी सीखा है कि रियल लाइफ हीरो वो होते हैं जिन्हें पता होता है कि मैंने अगर ये काम किया तो maybe I'm taking risk, but still they are taking risk for the welfare of the society, for the welfare of the other person. Okay, I have learned that money is a lousy way of keeping score. And I have also learned from my life that पैसा ही वो एक जरिया है जो आपके लिए बोलता है। ठीक है, I have learned that my best friend and I can do anything or nothing and have the best time. And I have also learned that me and my best friend, if we are together, then we can achieve anything. Okay, and if we are not together, then we are not going to achieve anything in our life. I have learned that sometimes the people you expect to kick you when you are down will be the ones to help you to get back up. Okay, so my dear students, I have also learned, means this line is saying that I have also learned कि जब आप सोचते हो ना कि आप प्रॉब्लम में हो और आपको पता है कि ये जो है, जो ये इंसान है, ये डेफिनेटली मेरे को हेल्प नहीं करेंगे मेरे प्रॉब्लम्स में, बट उसका उल्टा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जिससे आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं होता है वही हमारी हेल्प करते हैं, और जिनसे आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो हमें हेल्प करेंगे, वो क्या काम करते हैं, वो हमारी हेल्प नहीं करते हैं। तो मैंने ये चीज भी अपने लाइफ से सीखी है।
I have learned that sometimes when I am angry, I have the right to be angry. But that doesn't give me the right to be cruel. मैंने ये भी सीखा है कि जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गुस्सा होना चाहिए, मैं गुस्सा हो सकती हूँ, लेकिन गुस्सा होना मुझे ये परमिट नहीं देता है कि मैं क्रूअल बन जाऊं. ठीक है? I have learned that just because someone doesn't love you the way you want them to doesn't mean that they don't love you with all they have. मैंने अपने लाइफ से ये भी सीखा है कि हम जिनसे जितना प्यार करते हैं, ठीक है, मे बी आवर फ्रेंड्स और मे बी आवर पेरेंट्स, okay, it is not mandatory that we get all those love in return. ओके, इट इज नॉट मैंडेटरी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करते हैं. बस क्या है कि हम जितना प्यार करते हैं वो हमसे उतना नहीं करते हैं. ठीक है? I have learned that maturity has more to do with what type of experience you have had and what you have learned from them. Less to do with how many birthdays you have celebrated. अच्छा, maturity क्या है? समझदारी क्या है? समझदारी ये होता है कि आपने कितना एक्सपीरियंस लिया है. मीन्स जब आपने कोई गलत काम किया तो ऑब्वियस सी बात है आपको आपके पेरेंट्स से डांट पड़ी होगी. ठीक है? तब आपको वो एक्सपीरियंस मिला कि अच्छा मुझे ये काम नहीं करना है जस्ट बिकॉज माई पेरेंट्स आर हर्टेड. ओके, तो ये आपको एक्सपीरियंस मिला. तो मेच्योरिटी इसको कहते हैं. ठीक है? मतलब समझदारी इसको कहते हैं. ये ना कि मैंने इतने बर्थडे इतने ज्यादा ग्रैंड सेलिब्रेट किए हैं. ठीक है? I have learned that you should never tell a child their dreams are unlikely or outlandish. Few things are more humiliating and what a tragedy it would be if they believe it. अच्छा, मैंने ये भी सीखा है कि आप कभी किसी बच्चे से ये मत कहिए कि जो ड्रीम तुम देखते हो वो बहुत ही बेकार है, ये यू कांट अचीव योर ड्रीम. ओके, क्योंकि क्या होता है जब आप किसी बच्चे से ऐसा बोलते हो ना, थिंग विच यू आर डे ड्रीमिंग, ओके, it will become a very it is very hard to achieve that. तो जब आप ये बात बोलते हो ना, actually it act as a very humiliating, means you are insulting, means you are insulting that child. Okay, I have learned that it isn't it always enough to be forgiven by others. Sometimes you are to learn to forgive yourself. मैंने अपने लाइफ में ये भी सीखा है कि जरूरी नहीं है कि हर बार आप दूसरों से ही माफी मांगो और वो आपको माफ करें. कभी कभी क्या होता है, हमें हमारे लिए ये जरूरी होता है कि हम खुद को माफ करें. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई गलती ऐसी हो जाए और आप लोगों को ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स बस मुझे माफ कर दें. ठीक है, और आपके पेरेंट्स ने आपको माफ भी कर दिया, बट स्टिल यू आर फीलिंग अनईजी. एंड व्हाई यू आर फीलिंग दैट अनईजीनेस? बिकॉज you didn't forgive yourself. So, my dear student, first learn to forgive yourself, then expect forgiveness in return from other persons. Okay? I have learned that no matter how bad your heart is broken, the world doesn't stop for your grief. मैंने ये भी सीखा है कि जरूरी नहीं कितने बुरे तरीके से आपका दिल टूटा है, मीन्स आपको क्या चीज बहुत खराब लगी है, ये वर्ल्ड आपके लिए नहीं रुकेगा. ठीक है? I have learned that our background and circumstances may have influenced who we are, but we are responsible for what we become. मैंने ये भी सीखा है कि सही बात है, मैं जो आज हूँ, सबको पता है कि मैं किस फैमिली से आई हूँ, मैं क्या करती हूँ, लेकिन मैं आगे क्या करूंगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, मेरी फैमिली नहीं है. I have learned that a rich person is not the one who has the most, but it is one who needs the least. And I have also learned that the person, okay, that person is only rich in this world, okay, who have least needs. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने अपने लाइफ में ये सीखा है कि अमीर वो इंसान नहीं होता जिनके पास बहुत पैसा है, बल्कि अमीर वो होते हैं जिन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि मुझे किसकी नीड है. ठीक है? I have learned that just because two people argue, it doesn't mean they don't love each other. And just because they don't argue, it doesn't mean they do. अच्छा, मैंने ये भी सीखा है कि जब दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं, मीन्स लड़ते हैं किसी भी बात को लेकर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं. और जो बिल्कुल भी नहीं झगड़ते हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है? I have learned that we don't have to change friends if we understand that friends change. And I have also learned from my life that we don't need to change our friend.
Okay, we don't need to change our friend according to the situation, but we only need to understand a very basic thing, that our friends also changes with the change of time. I have learned that you shouldn't be so eager to find out a secret. It could change your life forever. And I have also learned from my life that don't be in hurry to know each and every secrets, because all those secrets are going to change your life forever. Okay? I have learned that two people can look at the exact same thing and see different totally, see something totally different. मैंने ये भी सीखा है कि एक ही चीज को दो लोग तो देखते हैं, लेकिन वो समझते डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई मूवी देखी, आपने अपने सिबलिंग्स के साथ, ठीक है, आपने कुछ और उस मूवी का मतलब समझा, आपके सिबलिंग ने कुछ और समझा। ठीक है, देखा तो आप दोनों लोगों ने एक ही मूवी है, but you two siblings are understanding the different meaning of that movie. I have learned that even when you think you have no more to give, when a friend cries out of you, you will find the strength to help. अच्छा, मैंने ये भी अपने लाइफ से सीखा है कि जो मुझे ये फील होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है जिसके थ्रू मैं किसी और की हेल्प कर पाऊँ, बट ऑल ऑफ सडन अगर मेरा फ्रेंड मेरे सामने आके रोने लगता है कि मुझे ये हेल्प चाहिए, then I will find a way to help my friend. I have learned that credentials on the wall do not make you a decent human being. मैंने ये भी सीखा है अपने लाइफ पे, जो वॉल्स पे लिखे होते हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें, गुड थिंग्स जो लिखी होती हैं, मैंने ये भी सीखा है कि सिर्फ उनको पढ़ने से आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं बनोगे। I have learned that the people you care about most in life are taken from you too soon. मैंने ये भी सीखा है कि हम जिनको बहुत ज्यादा अपने लाइफ में मानते हैं, वो आपको बहुत जल्दी छोड़ के भी चले जाते हैं। I have learned that it's hard to determine where to draw the line between being nice and not hurting people's feeling and standing up for what you believe. मैंने अपने लाइफ से ये भी सीखा है कि किस तरीके से एक लाइन हमें खींचनी है, मुझे जहां अच्छा होना है और जहां मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है। ठीक है, और मैंने ये भी सीखा है कि मुझे अपने लिए भी स्टैंड लेना सीखना है। ठीक है, I have learned that people will forget what you said and people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. मैंने ये भी सीखा है अपने लाइफ से कि आपने, ये जो पूरी दुनिया है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये भूल जाते हैं कि आपने क्या किया है। ठीक है, आपने क्या बोला है। ठीक है, वो ये भूल जाते हैं कि आपने क्या बोला है, आपने क्या किया है, लेकिन ये लोग ये नहीं भूलते हैं कि आपने कैसा उनको फील करवाया है। ठीक है, अगर आपने उनको हैप्पीनेस दिया है, देन दे आर गोइंग टू फील वेरी हैप्पी। इफ यू मेक देम एंग्री, ओके, तो वो याद रखेंगे आपने उनको गुस्सा दिलाया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने अपने लाइफ से सीखी हैं। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो आई एम टेकिंग लीव एंड गोइंग टू मीट विद यू ऑल इन माय नेक्स्ट सेशन with a new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.